So today's topic is teaching aptitude. Okay, teaching aptitude, first part we will start. So bit of concept related to teaching, objectives. This is the most important part, levels of teaching from where questions come, and certain characteristics and basic requirements of teaching. So if you look at the syllabus, this is your first line of teaching aptitude. Now, what does this teaching aptitude mean? टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों, व्हाट डज दैट मीन, हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या मेजर करता है? सिंपल, रिमेंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आर मेजर्स ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज. आपके अंदर क्या है, क्या पोटेंशियल है, वो जानने के लिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं. ओके, द फ्यूचर, द पर्पस इज प्रेडिक्टिव. हमको मालूम है हम क्या चाहते हैं उनसे. वी नो दैट, वी नो द पर्पस, and their focus often is narrowed to a single ability or small collection of related abilities. ठीक है, पर्पस प्रेडिक्टिव है, फोकस लेकिन नैरो है, एक सिंगल एम के लिए, सिंगल अचीवमेंट के लिए वी आर फोकसिंग, which ensure that the candidates who want to enter the teaching profession have required knowledge and skills. ऐसे देखो, ये यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्यों हुआ? क्योंकि आगे चल के हम लोगों को कुछ बच्चों को पढ़ाना है. अगर हमारे अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी गुड टीचर्स इन द सोसाइटी. We cannot develop our generation that are coming in the near future, right? So the basic things has to be there, and for that teaching aptitude tests are coming into picture. So teaching aptitude refers to basic qualities required to become a successful teacher. जो भी बेसिक क्वालिटी चाहिए होती है एक टीचर बनने के लिए, वो सारे के सारे चीजें हम टीचिंग एप्टीट्यूड में ही पढ़ेंगे. और व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज? आपको क्वालिफिकेशन तो चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, एंड बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं टू बिकम अ गुड टीचर, सक्सेसफुल टीचर. Now there was a statement, there was a quotation given by Mohandas Karamchand Gandhi that by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. तो उन्होंने क्या बोला कि एडुकेशन का मतलब क्या है? एक बच्चे के अंदर से या फिर एक इंसान के अंदर से I'll be finding out the best, I'll draw the best from his body, from his mind and from his spirit at once. So literacy is not the end of education or even the beginning. आप पढ़ लियो, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, नहीं. It is, you cannot say that it is end or you cannot say it is the beginning. Okay, and there was a quotation given by Nelson Mandela कि education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ठीक है, education के बिना आप world को change नहीं कर सकते. It's the most powerful weapon. Now teaching क्या है? ये जो teaching हम बोल रहे हैं, what it includes? बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ हम कंफ्यूज करते हैं अपने टीचिंग, द टर्मिनोलॉजी. टीचिंग को हम इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, टीचिंग को हम कंडीशनिंग बोल रहे हैं, टीचिंग को कभी कभार हम ट्रेनिंग भी बोल रहे हैं, टीचिंग को कभी कभी हम इंडोक्ट्रिनेशन भी बोल रहे हैं. But actually there are certain difference between teaching and these four similar words. The main function of teaching is to make learning effective, no doubt in that. Okay, तो ये learning process कब complete होगा? As a result of teaching, would get completed as a result of teaching. So teaching and learning are very very closely related to each other. ठीक है, now देखिए, teaching versus other things, teaching versus conditioning, teaching versus training, teaching versus instruction, teaching versus indoctrination. Now मैं conditioning की बात अगर मैं करूं पहले, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था by Ivan Pavlov. Name is Ivan Pavlov. Okay, तो उन्होंने क्या किया था? He had conducted an experiment by taking up your plate of meat को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे. मीट और डॉग, ठीक है, मीट और एंड डॉग एंड बेल, ये तीनों चीजों को लेके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था.
आप खुद ही कर सकते हो घर पे ये वाला एक्सपेरिमेंट। आप क्या करो, एक मीट का थाली पकड़ के जाओ कोई भी कुत्ते के पास, तो वो क्या करेगा, वो मीट को देके वो सैलिवेट करेगा, लाल टपकाएगा ऐसे, हाँ हाँ होते हैं ना वो, दैट साउंड विल कम, okay, but just by seeing the piece of meat the dog will salivate. This is a natural response, this is a stimulus, okay, मीट हो गया आपका स्टिम्युलस और सैलिवेशन हो गया आपका नेचुरल रिस्पॉन्स। इसमें कुछ आप करते नहीं हो, कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो। अगले दिन आप क्या करोगे, खाना लेने से पहले आप वहां पे बेल बजाना चालू करोगे, तो वो कुत्ता कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल, ही विल बी नॉर्मल। द मोमेंट ही विल सी द पीस ऑफ मीट ही विल अगेन स्टार्ट salivating. So this will continue, let's say, for 21 days. For, let's say, in some pictures it can be reduced, in some it can be more. So let's say it went for 21 days. 22nd day, the moment you will start ringing the bell, the dog will start salivating. Okay, तो उसको समझ में आ जाएगा अभी घंटी बजा ना, मतलब इसके बाद खाना आएगा, तो घंटी के साउंड से ही वो सैलिवेट करना चालू कर लेगा। ओके, सो दिस एंड नाउ ये क्या हो गया, ये बंदा कंडीशन हो गया, यहाँ पे कंडीशनड हो गया, सो इट इज नोन एज कंडीशनिंग। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ये दिए थे आइवन पैवलोव। एंड नॉर्मली टीचिंग में हम लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, बट टीचिंग इज एंटायरली डिफरेंट, राइट? सो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। व्हाई? बिकॉज वहां पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है। ओके, लेकिन कंडीशनिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका लर्निंग हैबिट्स को ही मॉडिफाई करवा रहे हैं, राइट? कंडीशनिंग में उसका करिकुलम, वो जो सीखेगा वो फिक्स्ड है, एंड वो कैसे सीखेगा, बार बार वो चीज को रिपीट करेगा। लेकिन टीचिंग में तो वो नहीं है, टीचिंग में हम उसको रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, टीचिंग में करिकुलम सिलेबस बहुत ही वास्ट है। टीचिंग में वी डोंट होप दैट the person will go for the same production of behavior at all the cases. No, that is wrong actually. Second में teaching is different from training. Now training क्यों? Training purely practical है, okay, but teaching theoretical है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग में क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, रोल प्लेज है, सिमुलेशंस है। तो ट्रेनिंग हो गया आपका प्रैक्टिकल, टीचिंग हो गया आपका थियोरेटिकल। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक बंदा होता है, वो बोलता है कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, राइट? एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। बट टीचिंग में क्या है, हम वहां पे उस बच्चे के अंदर में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हियर आई एम नॉट इंस्ट्रक्टिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस टीचिंग मीन, राइट? टीचिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर डिफरेंट। कैसे? इंडोक्ट्रिनेशन, ये जो शब्द इंडोक्ट्रिनेशन है ना, इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सिर्फ एक ही वन सॉल्यूशन है। इंडोक्ट्रिनेशन possess that there is only one solution to the problem, while teaching points out that there are different solutions to the same problem. समझ में आया चारों के चारों? टीचिंग कंडीशनिंग से कैसे डिफरेंट है, टीचिंग ट्रेनिंग से क्यों डिफरेंट है, टीचिंग इंस्ट्रक्शन से क्यों डिफरेंट है, एंड टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन कैसे डिफरेंट है? गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ओके, मनीषा, प्रकृति, संदीप, सश्मिता? यस मैम। ओके, शाश्वतिका, ओके, हाँ, कृष्ण, गुड। शाश्वतिका, श्रद्धांजलि, सुचिस्मिता? यस मैम। जितना पढ़ाया गया है समझ में आ रहा है? यस मैम। Okay, fine. So we'll continue. I think Akanksha had some network issues. She's not there. Okay, koi nahi. Now, meaning of teaching. What does teaching mean? Teaching is a process in which
one individual teaches or instruct another individual. टीचिंग एक्चुअली क्या है? टीचिंग में एक बच्चा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पढ़ा रहा है. ओके, टीचिंग इज considered as the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation only. ड्यूई ने टीचिंग का क्या डेफिनेशन दिए हैं देखो. इट कंसिडर्स एज अ मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन where the learner will acquire skills and insight with its own initiation. ड्यूई ने बोला कि टीचिंग क्या है? सिचुएशन को मैनिपुलेट करके हम पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चा सीख रहा है वो स्किल्स भी एक्वायर कर सके. एच.सी. मॉरिसन ने डिफाइन किया टीचिंग को कि इट्स एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन. ठीक है, जो इंसान ज्यादा मैच्योर है उनसे, सपोज मैं हूं यहाँ पे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अंडरगॉन दिस थिंग, सो बिटवीन द मोर मैच्योर वन एंड अ लेस मैच्योर वन आप लोग सीख रहे हो. सो इट इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट. अगर आप टीचर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बिल्डअप कर पाते हो, then teaching process won't be successful. What does Jackson said? Jackson ने बोला कि it is a face-to-face encounter between two or more persons. Two कौन होगा? एक तो confirmed teacher होगा, दूसरा कौन होगा? Students. And what is required to be done? Certain changes has to be done. Okay, so these were the definitions of meaning. Let's understand the objective of meaning. See, चारों objective हैं जो कि बहुत ही important है. पहले नॉलेज को अक्वायर करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग चीजों को, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, दे नीड टू गो थ्रू, उनको समझ में आना चाहिए. उनका कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पैरेलली डेवलप होनी चाहिए वो टॉपिक में. एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज. ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी गो फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज nature and characteristic of teaching. Okay, that was also a topic that we had to complete today. पहला characteristic है teaching is a social and cultural process. सोशल एंड कल्चरल क्यों हम इसको बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्लान्ड है ताकि एक इंडिविजुअल कुछ सीख सके अपने लाइफ में, which is planned in order to enable an individual to learn something in his life. He is learning from his society, he is learning from his culture. खाली मैं आपको ये बता दी बस ये नहीं हो रहा है. आप see what, yeah, teaching is a complete social process. कंप्लीट सोशल प्रोसेस का मतलब क्या है? हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं, सीख रहे हैं एंड सोसाइटी को कुछ वापस दे रहे हैं. कैसे? देखो, अभी मैं सोसाइटी से कुछ बच्चे आए हैं सीखने के लिए. You people came from the society. You people will learn from society. And once you grab the entire thing, you will be asked to go to the society back and give your things back to the society. So teaching is undertaken from society and by society, and we have to give something return back to the society also. तो हम इसको totally एक complete social process बोलेंगे. टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन. हमेशा याद रखिए, आप लोग जब टीचर बनेंगे कोई भी चीज अपने पास कन्फाइन मत कीजिए. ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. उनको जानने का हक है एंड स्टूडेंट्स अपने आप में निकाल सकते हैं, बट आप भी बताइए. ठीक है, टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन. डोंट कन्फाइन योर थिंग्स to just limited stuff. Okay, share everything with your students. Communication of knowledge is an essential part of teaching. जैसे मैंने अभी आपको बोला, इंफॉर्मेशन के साथ आपको नॉलेज कम्युनिकेट करना भी चाहिए. टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, राइट? आप कम्युनिकेट कीजिए मेरे साथ, इंटरेक्ट कीजिए. अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू मी? आई विल फील ओके, ठीक है, मैं किसको पढ़ा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, राइट? सो द एंथू वोंट कम, the proper guidance won't come, the progress won't come, the development of students won't happen in such a way that it was used to be, right? So interaction is a must here. Next, teaching is a skilled occupation.
Why it is a skilled occupation? जो भी टीचर है उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बच्चे के अंदर से कैसे कुछ हम अच्छे से निकाल सकें. Okay, like to bring the best from a student, the teacher should know. The teacher should know the teaching learning situations. The teacher should know how to make the student reciprocate to the topics that are being discussed. The teacher only should know it. Okay, now these are the characteristics of teaching. नाउ इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में, एंड क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट. लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. हमेशा याद रखिए 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. ना व्हाट डज मेमोरी? मेमोरी का मतलब क्या है? हम रट्टा मारते हैं. जब एग्जाम के पहले दिन हम क्या करते हैं? हम रट्टा मारते हैं. अंडरस्टैंड आप लोग अभी कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो. एंड रिफ्लेक्टिव जो यूजीसी नेट एग्जाम में आप देने वाले हो, आप सोचोगे अच्छा मैम ने ये पढ़ाया, मैं ये रिविजन की थी, मैं यहाँ पे गई थी, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने किया हुआ था, एंड यू ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स. समझ में आ गया तीनों? एक है मेमोरी, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. देखते हैं आगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है. मेमोरी लेवल में क्या है कि यहाँ पे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट किया जाता है. इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग. क्रैमिंग इज रिलेटेड टू रॉट लर्निंग. मतलब आप सिर्फ मगअप करते हो. एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम उसको क्या दिखाते हैं? हम इसको एक ऐसे एक एप्पल करके पिक्चर करके दिखा देते हैं रेड कलर का, एंड असलियत में भी एप्पल लेके उसके सामने रख लेते हैं और बोलते हैं देखो बेटा ये है एप्पल, इसको जानो ये है एप्पल. तो वो बच्चा क्या करता है? वो छोटा सा बच्चा वो पिक्चर को देखा, असलियत में एप्पल को देखा एंड वो रट लिया उसको कि यही एप्पल है, राइट? तो he just went for a rote learning of facts. Same thing happens in memory level of teaching. memory level में आपको सारे facts information, मैं यहाँ पे कुछ दिमाग में information दे रही हूँ, आपको ये रट्टा मारना ही है. So knowledge or information is gained through memorization only. मेमोराइजेशन में जितना आप सोच सकते हो उतना काफी है. Is my voice breaking, guys? No, ma'am. No, ma'am, it's clear now. Okay. It is the initial stage of teaching. अगर एक बच्चे को एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ये सब याद नहीं होगा, आप उसको कुछ भी नहीं समझा सकते हो. सो मेमोरी लेवल पहला लेवल है, इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग. Okay, and it induces the rote learning of facts and subject matters. यहाँ पे क्या, it provides students the ability to retain. आप रटो और उसको याद रखने की कोशिश करो, एंड जब भी जरूरत पड़े आप उसको रिटेन करो, एंड रिप्रोड्यूस द लर्न्ड सब्जेक्ट. ओके, तो ये लेवल में एक बच्चा क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉल कर रहा है या फिर रिमेम्बर कर रहा है. आइदर ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, एंड रिटेन देम इन द मेमोरी. सो मेमोरी लेवल में बच्चा आइडेंटिफाई, रिकॉल, रिमेम्बर, ही डज ऑल दीज थिंग्स. Who plays a major role in this level? The teacher plays a very dominating and authoritarian role. जो टीचर पढ़ाया वही फुल एंड फाइनल है, क्योंकि वहां पे इन बच्चों से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो दिमाग यहाँ पे लगाए, राइट? यहाँ पे वो लोग रट रहे हैं. सो टीचर प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल. टीचर प्लेज एन ऑथोरिटेरियन रोल हियर. इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन. ठीक है, क्योंकि बार बार वो चीज उनको प्रोड्यूस करनी है. सो द बेस्ट वे इज ओरल, रिटन एंड एसे. टीचर इज प्रोमिनेंट, प्राइमरी एंड एक्टिव. स्टूडेंट इज सेकेंडरी एंड पैसिव. ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग में आप अपना इंटेलिजेंस इंप्रूव नहीं कर सकते हो या फिर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं करवा सकते हो, बट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर लेवल्स. एंड हर्बाट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल. की प्रोपोनेंट इज हर्बाट. हर्बाट ने ये पूरा लेवल के बारे में बताया था. किसी को डाउट है ये स्लाइड में? पूछिए. Any doubt? Sandeep, do you have any doubt?
No, ma'am. No, ma'am. I got it. Okay. Ma'am, point number Shraddhanjali, 4. you were saying something? Okay, fine. मैम पॉइंट नंबर 4 थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू रिटेन. एक बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है. अगर मैं आपको बोली अभी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ठीक है, तो आप आज के डेट पे भी हमको याद है वो चीज. A फॉर एप्पल, एप्पल का कलर ये है. B फॉर बॉल, बॉल ऐसे दिखता है. तो व्हेनेवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वो बच्चा रिटेन कर सकता है. जो भी चीज वो रटा हुआ है वो रिटेन कर सकता है एंड उसको वो रिप्रोड्यूस कर सकता है जब भी जरूरत पड़े. So that is point number 4. Okay, यस मैम. fine. Manisha, any other doubts? Prakriti and Manisha? No, ma'am. Okay. Prakriti, what about you? Fine. So let's go deep into the next part of memory level teaching. क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी. देखो कितने टाइप ऑफ मेमोरी है. हमें सिर्फ मेमोरी पता है, कंप्यूटर का रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इतना ही मालूम है. बट अगर इंसानी दिमाग देखा जाए तो इतना क्लासिफिकेशन है मेमोरी का. इमीडिएट मेमोरी, जो हम इमीडिएट रिकॉल कर सकते हैं. परमानेंट मेमोरी, जो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिकॉल कर सकते हैं. पर्सनल मेमोरी, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हैं ना, हम अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस को भी रिकॉल कर सकते हैं. दैट इज नोन एज पर्सनल मेमोरी. इम्पर्सनल मेमोरी, हम किताब या कुछ चीजों, एनवायरनमेंट को देख के हम कुछ रिकॉल कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं इम्पर्सनल मेमोरी. नेक्स्ट है आपका एक्टिव मेमोरी. जैसे हम एग्जाम्स में हम क्या करते हैं, हम एफर्ट डालते हैं कि हमने ये कहाँ पढ़ा है. सो दैट इज द केस ऑफ एक्टिव मेमोरी. पैसिव मेमोरी, विदाउट एनी एफर्ट हमको कुछ चीज याद आ रहा है, दैट इज नोन एज पैसिव मेमोरी. व्हाट इज मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी? जैसे आप बिस्तर से उठे हो, सीधा वॉशरूम जाते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, राइट? या फिर बाहर से, अभी कोरोना के टाइम के चलते हम लोग सीख गए, बाहर से आ रहे हैं तो हम सैनिटाइज करते हैं, कपड़े लेके वॉशिंग मशीन में डालते हैं, कपड़ा पैर हाथ धोते हैं एंड अपना फ्रेश हो जाते हैं पूरा. सो विदाउट थिंकिंग मच, these are the repeated tasks that we are doing. That is known as mechanical or physical memory. बॉडी ही accustomed हो गया है कि बाय डिफॉल्ट इसको ये करना है, आप इसके लिए कुछ सोचते नहीं हो. रॉट मेमोरी, रट्टा मारना, क्रैमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग. लॉजिकल मेमोरी, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड. जब भी जरूरत है आप ये चीज को रिकॉल कर सकते हो, या फिर कोई चीज आप लर्न किए हो बाय यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल पावर. दैट इज नोन एज लॉजिकल मेमोरी. तो 9 टाइप मेमोरीज हैं. 3, 4, 5, 6, yes, 9 classifications of memory. Understood this part? Immediate, permanent, personal, impersonal, active, passive, mechanical or physical, rote and logical memory. 9. Okay. Yes, ma'am. Next we go to understanding level of teaching. जैसा मैंने आपको बोला, understanding level of teaching के लिए what is important, your memory level of teaching is mandatory. अगर memory level of teaching आपका सही नहीं है, आप अगर ठीक से वहां पे रटे नहीं हो, तो अंडरस्टैंड तो आप कर ही नहीं सकते हो. सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द प्रीरिक्विजिट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में हम प्रिंसिपल्स, थ्योरी, अदर की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं. दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बच्चे ने कुछ रटे हैं, facts and information, the student has learned, mugged it up. Now in this level, the thinking level is now enriched. Okay, the teacher explains the student about the relationship between principles and facts and teaches them how these principles can be applied. ये particular level में teacher क्या बताता है, relationship बताता है, as well as application के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया जाता है.
अंडरस्टैंडिंग लेवल में इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, जैसे आप फुल एंड फाइनल मास्टर बन सकते हो एक सब्जेक्ट में, इट फोकसेस ऑन दैट. It provides more and more opportunity for the students to develop skills of memory and insight. आपने कुछ चीज रट्टा मारा है, आपको टीचर ने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है एंड एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है, तो आप इन झांक के you will now find out different ways how to apply those concepts in different situations. यहाँ पे evaluation system mainly objective type questions है and essay which is done by your UGC NET. वो जानने की कोशिश कर रहा है बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है चीजों के बारे में. स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड यहाँ पे मेन प्रोपोनेंट है मॉरिसन. मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ओवर. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? किसी को डाउट है ये लेवल में? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. Fine. One second, guys. ठीक है, आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में. मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया. Has divided the understanding level of teaching into 5 steps. Exploration, presentation, assimilation, organization and recitation. Exploration में क्या है? जो बच्चा previous knowledge what is the previous knowledge that the person has learned? So it will be tested. The content will be analyzed. Presentation में क्या है? Content is presented, diagnosed and recapitulated till the student understands. कंटेंट को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में डायग्नोज करके एंड कैप्सूल वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि बच्चा समझे. असिमिलेशन, यहाँ पे आपको सारे चीजें, जैसे मैं अगर आपको अभी वोल्केनो के बारे में अगर पढ़ाने जाऊं तो आई हैव टू शो यू अ वीडियो कि लावा कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे जमीन फट के निकल के माउंटेन से निकल के एंड व्हाट इज द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस volcanic eruption. I have to show this. So assimilate. I will try to assimilate everything. इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गया, जनरलाइज चीजें हो गया, लैबोरेटरी में आप काम कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंटेंट, एवरीथिंग आई विल असिमिलेट सो दैट अ स्टूडेंट विल लर्न इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे the students are provided with occasions for representation. तो आप ग्रुप फॉर्म करके कुछ चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट करते हो. एंड फाइनली रिसाइटेशन, जब एक बच्चा यहाँ पे कंटेंट ओरली डिलीवर करता है. सो दीज आर द 5 levels of teaching as per understanding level and as per Morrison. Actually Morrison gave this. Next we will go to reflective level of teaching. Now reflective में क्या है? देखो आप अभी कुछ चीजों को रट लिए हो, चीजों के बारे में समझ भी लिए हो एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको मालूम है. So reflecting on something means giving careful thought to something over a period of time. It also means thinking deeply about something. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव में हम दोनों बातें करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं एंड मेमोरी लेवल के बारे में भी बात करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड ओरिजिनल थिंकिंग. यहाँ पे एम्फोसिस क्या है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें एंड एक सोल्यूशन निकाल के लेके आए. सो स्टूडेंट का यहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होता है ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ टीचिंग में. यहाँ पे स्टूडेंट का रोल एक्टिव एंड प्राइमरी हो गया, टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव. देखो जब वंस आई कंप्लीट टीचिंग यू द एंटायर नेट सिलेबस, तब वहां पे मेरा रोल बहुत कम है, तब स्टूडेंट्स का रोल बहुत ज्यादा हो गया. मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या क्या क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व किए हो, कहाँ कहाँ से आप पढ़े हो, एंड यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. सो हंट इज द मेन प्रोपोनेंट हियर इन रिफ्लेक्टिव लेवल. यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में दोनों ही ULT एंड MLT आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल.
It is basically problem centered teaching, and students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem. ठीक है, यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट है क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुल के डिस्कशन कर सकता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकता है, ओरिजिनल थिंकिंग कर सकता है. हंट डेवलप द रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग, जो कि बहुत सारे स्टेप्स देके जाता है. वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अराउंड द प्रॉब्लम. सो बेसिकली यू आर नॉट ब्लाइंडली कमिंग टू अ सॉल्यूशन, you are totally, the student will totally analyze all the situations and then give a final conclusion. रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप में, क्या वो चीज सीखा है, कितना वो प्रैक्टिस किया है, कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है, and then he answers it. Essay type test is used to evaluate the learning process, and the teaching at this level is not teacher centered or subject centered. It is purely learner centered. बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है. And as I said, Hunt is the main proponent of this level. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. मैम Yes. मैम सब्जेक्ट सेंटर एंड लर्नर सेंटर में क्या डिफरेंस है? Learner centered का मतलब क्या है? Now what I said is teaching centered. I gave you something teacher centered. बट इसके बाद आज शाम को आप जब पढ़ोगे, आप जब क्वेश्चंस खुद ढूंढोगे, आप जब ये सब्जेक्ट को फिर से सुनने की कोशिश करोगे, वीडियो फिर से देखोगे, एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो नाउ इट बिकेम लर्नर सेंटर्ड. लर्नर कितना ग्रैब कर दिया ये पर्टिकुलर टॉपिक को, दैट डिपेंड्स ऑन दिस. ओके, एनी अदर डाउट? फाइन. So all of you know how to use chat. Zoom में एक chat option है, आप लोग अपने screen में देखोगे 3 dots है. If you click on that, there is a chat option. Okay, so we will be solving some questions, and all of you have requested to give your answers through chat mode. Can you all give? Okay, good. So first question is, which of the following teaching level is suitable for kids? Understanding, reflective, memory level, and none of the above. Which of the following teaching level is suitable for kids? Is it understanding, reflective, memory, and D, none of the above? I want an answer from all 12 of from all of you. Okay. Someone has not given. Krishna gave, Lipsa gave. Manisha, please try to answer. Yes, Manisha, you have not answered. Please try to answer. Okay, Sashmita, Manisha gave, good. Sashwatika gave. Shraddhanjali gave, okay. Suchasmita also gave the answer. Akanksha, you joined late, but still try to answer. Okay, whatever, if you recall anything, just try to answer. Understanding level. No. Okay, no problem, no problem. So the answer to this question is, because we are talking about rot concept here. बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो रट्टा मारने के लिए सिखाते हैं, right? So it is known as memory level. Now let's move to understood. Kangsha, after this class, just go through the video link. Okay, talk with sir. Okay, and find out the necessary concepts and try to understand. If any doubt, Okay, you can ask me in the next class. Okay, ma'am. Which of the following is called introspective level of teaching? Is it memory, understanding, reflective, and none of the above? Try to understand the meaning of introspective.
Okay, got answers from Krishna, Preeti, Shraddhanjali, Prakriti, Satyabrata, Manisha, Sandeep, Shwetalina. Okay. See, everyone, you have to give your answer or else I'm not moving ahead. इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? झांक के कुछ चीज को, okay, we are trying to understand, we are going for introspection. Akanksha, Sashwatika, Lipsa, okay. I think understanding. Okay, let's see. Two more students are yet to give. Lipsa gave, Manisha gave the answer, Prakriti gave, Preeti gave, Sandeep also gave, Sashmita will give the answer, and Shraddhanjali will give the answer. Shraddhanjali also gave. Okay. Suchismita and Sashwatika, please try to understand. Okay, Suchismita. Sashmita, please give the answer. इंट्रोस्पेक्टिव, आप लोग गूगल में थोड़ा चेक करो इंट्रोस्पेक्शन का, व्हाट डज इंट्रोस्पेक्शन मीन? Yeah, just a minute, guys. There are some background noise. Okay. Introspection means self-analysis or observation of one's own mental and emotional process. If you look into Google and find out the answer, introspection means this. So अगर आप introspection की बात करते हैं, so the answer is reflective level. Okay, now let's move to the, yes, third question. How many teaching levels are available? Okay, Lipsa, Prakriti, Preeti, Shwetalina, Krishna, Shraddhanjali, Sashmita, Sandeep, Sashwatika. Obviously. And what are the three levels? If I'll ask, Manisha, Suchismita, वो तीनों level क्या है? Memory, understanding, reflective. Yes, MLT, ULT and RLT. Yep, correct. Yes, fine. Okay, so all of you are correct in this. Let's move to the fourth question. Which of the following is called lowest level of teaching? Which of the following is called lowest level of teaching? Is it memory? Is it understanding? Is it reflective? Or is it introspective? Okay, Preeti, Prakriti, Shwetalina, Lipsa, Sashmita, Krishna, Manisha. Sandeep, Sashwatika, Shraddhanjali.
Okay. I think everyone gave the answer. 1, 2, 3. Yes, Satyabrat, correct. The answer is memory level of teaching is the lowest level of teaching. Okay, let's move to fifth question. Which of the following is type of teaching and learning adopted by animals? Memory, understanding, reflective, or is it introspective? Animals के केस में कौन सा teaching and learning method use होता है, adopt होता है? We adopt. In case of animals, not in case of humans. Confusion between A and B option. Sandeep, Shwetalina, Shraddhanjali, Prakati, Lipsa. Okay, there is another option. Okay, D. Suchismita, Preeti, Manisha, Krishna, Sashmita. Someone has not given. One person has not given. I think Akanksha has not given. Okay, let's wait for Akanksha. And Satyabrat, I'm still waiting from you. From animals. Okay, Satyabrat also gave the answer. Akanksha is yet to give the answer. Ma'am, I given answer A. I I didn't think see. message is Acha, not acha. delivering. Oh, Maybe. it is not delivered. Okay, fine. So the teaching and learning that is adopted by animals is memory level. जो D दिए हैं, introspective का मतलब क्या है? Reflective. And animals के अंदर वो सोच के दिमाग निकाल के वो चीज है ही नहीं उनके अंदर, तो D तो पहले से गलत है. वो लोग कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं. जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में. जब हम कुत्तों को या फिर कोई भी एनिमल को सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, तो क्या होता है? बार बार हम वहां पे उनको सिखाते हैं. रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर्स आर डन देयर. सो मेमोरी लेवल, दे हैव टू लर्न इट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Understood, Satyabrat? Where you why it is known as memory level? I think Krishna, Preeti, Manisha, Sashwatika, Suchismita, Lipsa, Shwetalina, आप लोग का ये प्रॉब्लम गलत हुआ था. Are you now correct? Like okay with the answer? Understood Yes, this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Next, let's move to the sixth question. Which of the following is also called thoughtless teaching? Memory level, understanding level, reflective level, none of the above. Thoughtless teaching. Okay, Prakriti, Sandeep, Shraddhanjali, Preeti, Lipsa, Sashmita, Suchismita, Krishna, Manisha, Shwetalina, Sashwatika, again someone is missing from Akanksha. आपका आंसर शायद डिलीवर नहीं हुआ है. Ma'am, no idea, but I think maybe A. Okay, देखते हैं. Satyabrat, I'm waiting an answer from you also. Expecting an answer from you also. Okay, which of the following is called thoughtless teaching?
Yes, obviously the answer is memory level. यहाँ पे हम कुछ दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं. So that is why the memory level of teaching is also called as thoughtless teaching. Okay. Let's move to 7th question. Yes, Satyabrat, you are correct. So 7th question. Which of the following is basically focused on stimulus response? Which of the following is basically focused on stimulus response? Is it memory level, understanding level, reflective level, and none of the above? इनमें से कौन सा आपका स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? ओके, प्रकृति, श्रद्धांजलि, सष्मिता, लिप्सा, प्रीति, सुचिस्मिता, कृष्णा. Ma'am, I think reflective. Okay. Stimulus response. Just focus on the starting part which I had taught you. Okay, there are 2 options now, A and B, and D, C also. 3 options are there. Okay, Satyabrat also gave the answer. Krishna Sandeep, Manisha, Sashwatika. Someone is left apart from Akanksha. Someone is not given the answer. Let me check. Lipsa gave, yes. Manisha also gave. Prakriti. Sandeep also gave. Sashmita, please try to give. Sashmita also gave. I think Sashwatika. Okay. Shwetalina. Good. See, in the starting only I had said about this stimulus response. I was talking about classical conditioning theory. Stimulus and response. We learned it. We conditioned the dog in order to salivate. So memory level. यहाँ पे उसको रटना है. Right? So stimulus response theory is based on your memory level. Next question, question number 8. Reflective में क्या हो रहा है शाश्वतिका कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाया है, अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, you are going for a reflective method. Ma'am had taught something, you had understood something in this 1 hour, and you are trying to reflect what has been taught and you are trying to solve the MCQs. But stimulus response में आपको सोचने के लिए नहीं है. अभी आप गैस के पास कुछ काम कर रहे हो, अचानक से वहां पे कुछ गैस लीक होना चालू किया, तो आपको मालूम है आप क्या करोगे. आप ये नहीं वहां पे बैठ के सोचोगे और फिर झांकोगे, फिर एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे एंड देन आप रिस्पॉन्ड करोगे. नहीं, आप रटे हो. गैस अगर लीक कर रहा है उसको बंद करके दरवाजा खिड़की सब खोल दो और कुछ टाइम तक वो गैस को ऑन मत करो. आप यू हैव लर्नड दिस. ओके, सो स्टिम्युलस रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी. क्लियर? I have a शाश्वती. question, ma'am. Ma'am, Yeah, there is a confusion between memory level and reflective level, because like memory level is something कि आपने कुछ पढ़ाया और वो पढ़ के हमने like उसके according हमने response किया. नहीं, मेमोरी लेवल में आप सिर्फ रट रहे हो. Only आप रट रहे हो जो behavior में आ रहा है आपके. हाँ, डेली बिहेवियर में मैं अगर आपको पिंच करूंगी, आप दिमाग से आउच हाथ निकाल दोगे. ये नहीं कि आप झांकोगे वहां पे, सोचोगे. नहीं, आप निकाल दोगे तुरंत ही. So whatever you have learned by repeated production of behaviors, Okay, ma'am. that is known as memory. Okay? Okay, ma'am. Fine. So let's move to question number 8. And ये questions आपको कहीं नहीं मिलेंगे. I can give you a guarantee on that. Match the following. Some questions you won't get, and there are many questions you won't get in the net, and some तो obviously मिलेगा. Match the following. List 1 with list 2. List 1 में आपके हैं Hunt, Morrison and Herbert.
लिस्ट 2 में है आपके मेमोरी, रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू गो फॉर द करेक्ट कोड. ओके, ए बी सी ऑप्शन तो यही आ गए, बाप रे. ठीक है, देखते हैं कौन सही बोल रहा है ये वाला आंसर में, किसको याद है. ओके, okay, we got answers from Lipsa, Sandeep, Preeti, Shraddhanjali, Krishna, Manisha, Akanksha, Tashmita, Suchismita, Shwetalina. Sandeep changed the answer. Okay, Sashrutika. Satyabrat also. 1, 2, just a minute. Someone has still not given the answer. Akanksha diye hai, Krishna diye, Lipsa, you have given. Prakriti, have you given the answer? No, not yet. Prakriti, give the answer. Okay, fine. Yes, the correct answer is hunt, reflective. So A2, you have two options. Morrison, where? Morrison, understanding. Understanding. And Herbert, memory. So the correct option is B. Those who have given A and C, did you understand? Questions को ठीक से पढ़िए. आपको ये पढ़ाया गया अभी, and you forgot. क्वेश्चन देख के खुशी के मारे आप लोग क्लिक किए और कुछ नहीं. Okay, so please go through the options properly. Let's move to question number 9. From the following list of statements, select those which indicate the characteristics and basic requirements of teaching. इनमें ये जो statements जितने भी हम दिए हैं, you have to select which indicate the characteristic and basic requirements of teaching. You have to select that. Okay. Teaching implies communication. Teaching is like selling goods. Teaching means managing and monitoring. Teaching implies influencing others. Teaching requires convincing others. There can be no teaching without infrastructural support. So choose the correct answer from the code given below. ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है. Teaching implies communication. Teaching is like selling goods. Teaching means managing and monitoring. Teaching implies influencing others. Teaching requires convincing others. There can be no teaching without infrastructural support. Okay, Prakriti, Akanksha, Shraddhanjali, Shwetalina, Preeti, Sandeep, Sashmita, Sashwatika, Lipsa, Satyabrat. I've given the answers. Two more are still given, yet to give. Manisha also gave. Suchismita gave. I think Sashwatika also gave. Yes. Okay. So let's see the answer. Yes, the answer is correct. Teaching means implies communication. Selling goods तो है नहीं बिल्कुल भी. Means managing and monitoring. Influencing others. Convincing की बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है.
And there can be no teaching without infrastructural support. That is also wrong. So the correct option is A. Understood everyone? आप लोग सब ठीक आंसर Yes, दियो. ma'am. Correct. Good. Next question. Let's move to the next question. That is 10th question. I think the last question. What is the purpose of teaching? Impart knowledge. How better students learn, making a child better, human, all of the above. Okay, Shraddhanjali, Shwetalina, Akanksha, Preeti, Lipsa, Prakriti, Krishna, Suchismita, Sandeep. Yeah, Akanksha, I understood it. Manisha, Saishmita, Sashrutika. Still waiting from Satyabrat. Krishna, Lipsa, did you? Yes, Manisha also gave the answer. Prakriti gave, Preeti. Yep, Sandeep. Okay. Yes, Ravan, correct. Satyabrat also gave the answer. Sashmita, did you give the answer? Yes, you gave. Shraddhanjali also gave. She was the first one to answer. Suchismita, yes. And Shwetalina. Okay, fine. Yes, the correct answer is, what is the purpose of teaching? All of the above. You have to impart knowledge. You have to make students learn better, how better students learn, and making a child a better human. Development of values, right? The fourth point, development of values. So did you understand, those of you who did this wrong? Yes, ma'am. Okay, just a minute. Understood, Satyabrat? Okay. So you have any questions on today's topic? Any questions? Ma'am, can you summarize all the levels, please? All the levels? Yes, obviously. If we go for a summary, then just remember your memory level of teaching is basically focusing on your rote learning of facts. Okay, only rote. You have to cram the facts. या फिर आप ये याद रख सकते हो कि आपको यहाँ पे रट्टा मारना है. वहां पे 9 classifications of memory है, and Herbart is the main proponent there. फिर अंडरस्टैंडिंग आता है. अंडरस्टैंडिंग में आपका मेमोरी मैंडेटरी है. अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो वहां पे आप क्या करते हो, आप चीजों के बारे में सीखते हो, जानते हो, कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड के बारे में भी जानने की कोशिश करते हो. वहां पे मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ही इज द मेन प्रोपोनेंट देयर, एंड उन्होंने 5 क्लासिफिकेशंस दिए हैं for proper understanding level of teaching. Last but not the least is reflective level of teaching, जो कि हंट है मेन प्रोपोनेंट. हंट का मतलब क्या है, हम झांकते हैं वहां पे. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज अ मैंडेट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. यहाँ पे बेसिकली वी गो फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसे टाइप क्वेश्चंस, एंड रिफ्लेक्ट करते हैं. We try for independent thinking, we try for original solutions in this part. Okay, so this is the summary of the 3 levels of teaching. Okay, Akanksha? Yes, ma'am, understood. Thank you so much. Thank you. So please wait, all of you. I think sir is also there with us. Just a minute. और कुछ डाउट है आज के पार्ट में? हाँ, what is your task is, after this class आप लोगों को तो वीडियोस मिलेगा, YouTube में अपलोडेड है. What is expected from you? You are supposed to find out more answers, and you can personally ping on the number. आप सबको WhatsApp number पता है, so you can personally ping on that number, or you can send the questions directly to me
or we can discuss in the next class also, but you have to find out questions more and more. आप लोग, and you cannot copy the same questions that I have given here today, that I have discussed today. Okay, so आपका task है कि आप लोग questions खुद ही निकालोगे. ये particular class, characteristics of teaching, requirements of a teacher, and levels of teaching. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, all of you.